बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन तमाम तरह स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट ईयर इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं फॉर द एग्जामिनेशंस 2023 और परेशान हैं कि इतनी सारी चीज़ों की तैयारी हम कैसे करें। तो दिस टारगेट पेपर इज द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। अब स्टूडेंट्स चाहे साइंस के हों, चाहे कॉमर्स के हों, चाहे आर्ट्स, होम इकोनॉमिक्स या मेडिकल टेक्नोलॉजी के हों, ये वीडियो सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की, और सेक्शन ए एमसीक्यूज बेस्ड है, सबको पता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप एमसीक्यूज जो है पोएम्स के वो देख सकें, प्रैक्टिस कर सकें तमाम तरह पोएम्स के, तो आपकी स्क्रीन की टॉप राइट पे उसका लिंक शो हो रहा है, क्लिक करके देख सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेके एक बात और मैं बता दूं, बहुत सारे टीचर्स जो है वीडियोस बनाते हैं, आप एमसीक्यूज बच्चों को देते हैं और बताते हैं कि भाई ये 200 MCQs हैं, ये 300 MCQs हैं, these are the most important MCQs। याद रखिएगा कि MCQs में इंपॉर्टेंट बताना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। MCQs सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करें थ्रू आउट द बुक वो आपके लिए उतना ही ज्यादा जो है फायदेमंद होगा। लेकिन इस चक्कर में मत पड़िएगा कि ये वाले MCQs इंपॉर्टेंट है और सिर्फ इसकी तैयारी कर लें। आपको पूरी बुक का काम करना पड़ेगा, और पूरी बुक के MCQs के जो लिंक है वो आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल आप इन एमसीक्यूज के लिए करें, ये चूंकि फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस है, आप पॉज करें वीडियो को, अपने आंसर्स लिखें, और वीडियो के एंड में इन तमाम एमसीक्यूज का आपको आंसर मिल जाएगा। तो वहां से आप टैली कर लीजिएगा कि आपकी तैयारी कितनी ज्यादा है या कितनी खराब है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप प्रोज सेक्शन के भी एमसीक्यूज देख सकें, प्रैक्टिस कर सकें, तो आपके स्क्रीन की टॉप राइट पे उसका लिंक शो हो रहा है, वहां पे आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। पॉज करें वीडियो को, अपने आंसर्स को लिखें और फिर वीडियो को रिज्यूम करके आगे चलें। एंड में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। पॉज करें वीडियो को, आंसर्स लिखें और फिर वीडियो के एंड में इसके आंसर्स देख लें। इसके साथ भी यही करना है आपने। चलते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पेपर बिकॉज इट कंटेन्स 50 मार्क्स एंड दिस इज द बैकबोन ऑफ योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मसला यह है कि बहुत सारे क्वेश्चन है, कैसे तैयारी करें, तो उसका जवाब तो खैर आपके पास आ ही रहा है। और अगर आप ये चाहते हैं कि प्ले सेक्शन के भी सारे एमसीक्यूज देख सकें, तो आपकी स्क्रीन के टॉप राइट पे तमाम तर प्ले के एमसीक्यूज का लिंक मौजूद है, क्लिक करके देख सकते हैं। यूनिट नंबर 1 है कायद ऑन 11 अगस्त 1947। हमने कोशिश की है कि तमाम तरह चैप्टर्स और पोएम से एटलीस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल सकें, और उसकी लिस्ट बनाई है यहाँ पे। Why was the Qaid feeling honored while addressing to the first Constituent Assembly? Which is the greatest curse according to the Qaid-e-Azam? What was the Qaid's vision about religious freedom? Question 4. How far the key ideas of the Qaid's speech are applicable to the present scenario? Question 5 है, how can we make Pakistan prosperous in the light of the Qaid's vision? Unit number 2 है, once more to a lake. Why does writer take a vacation at this particular lake? How has the lake changed since he was a boy? Why is the arriving at the lake less exciting now than in the past? How are the boat motors different in the present situation? What kind of sensation persisted and grew in the mind of the writer? अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि प्रो सेक्शन के तमाम क्वेश्चन आंसर्स को देख सकें और उसको जान सकें, तो आपके स्क्रीन के टॉप राइट पे उसका लिंक शो हो रहा है। और मेरी वीडियो में जितने भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे नोट से हैं, उनका एक एडवांटेज ये है कि तमाम आंसर्स के जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग उर्दू में लिख दी है, तो वो स्टूडेंट्स जिन्हें प्रिपरेशन करने में या समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यूनिट नंबर 3 है द नेकलेस। What was Ma'am Loisel's reaction on reading the invitation? How was the life of Ma'am Loisel before the loss of the necklace? Describe in your own words how the Loisels, S के बाद apostrophe आनी चाहिए थी, गलती से पहले लगी हुई है। Loisel's life changed after they had paid for the new necklace. How had Ma'am Loisel's sacrifices been in vain? What lesson do you get from the story The Necklace? Unit 4 है technology smart and tech savvy. What do you mean by technological revolution? How is the technology boon for students? What are the benefits of e-commerce in today's world?
How does technology secure humans from calamities? How did technology contribute in keeping people's lives safe during the recent pandemic or disaster? प्ले के सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विद मीनिंग्स यानी कि डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग जो आंसर्स में है उसके साथ अगर आप देखना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के टॉप राइट पर लिंक शो हो रहा है, क्लिक करके देख सकते हैं. My bank account, according to the author, what is the effect upon him of entering a bank to do business? Why did the author decide to open an account? Question 3. What mistake did the author make when he wrote the check? Question 4. Why was there a roar of laughter when the author left the bank? Question 5. What was the manager's reaction when the author told him that he would like to see him alone? Unit 6, self-reliance. What makes a man great according to the author? Why is self-reliance important for one's development? What is the mark of genius according to the author? What happens when a person doesn't value one's own qualities? Why does the author emphasize on developing one's own individuality? Unit 7 is struggle for education. Why was Booker inspired to go to Hampton? What did Booker learn during work? What did Booker do in Richmond in order to reach Hampton City? Why did Booker not make a favorable impression on the teacher? What did Booker have to go through to get admission at the Hampton Institute? Unit 8 is a voyage to the city of Lloyds. Question number 1 has me describe briefly the significance of Singapore port. Question 2 have what are the reasons for prosperity of Singapore in spite of very little area? How is Singapore one of the attractive areas for tourists? How does Singapore keep itself clean? Why is Singapore called the fusion of East and the West? Question 9 है choosing career. What are the differences between a job and a career? Why should you choose a career that interests you? What causes demotivation in career? What is an aptitude test and how does it help choosing a career? Question 5 is why is it necessary to consult a veteran of the field before choosing a career? Unit 10 is pearls of wisdom. What did a wealthy man ask the poor brother and what was his reply? What did the wise man do to make the slave realize about the security of birth? What kind of virtue the sage wanted to teach to his students? How does the professional man earn respect according to the sage? How is lucky and unlucky? Who is lucky and unlucky according to the maxim given in the text? अब हमारा पोएम्स का सेक्शन आ गया है. पोएम 1 है द क्रिप्ट ऑफ हैप्पी लाइफ. इसका क्वेश्चन 1 है एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ सर हेनरी वॉटसन्स हैप्पी मैन हैविंग नथिंग येट एट ऑल what a happy man is taught from his very birth. Write the central idea of the poem, The Character of a Happy Life. What is the armor and the greatest skill of the person who leads a happy life? Why does Wotton's happy man pray God and how does he pass his day? Good poem 2 hai Don't Quit. The poem Don't Quit helps the reader to be optimistic in every situation. Discuss what effect does the poem Don't Quit create on the reader? What is the message of the poem Don't Quit? What is the benefit of not quitting as suggested in the poem? Why does the poet term life queer with twists and turns? Poem number 3 है Ozymandias. What did the traveler see in the desert and whom did he tell about it? How can you say that the sculptor was a great artist in the poem Ozymandias? What was written on the pedestal of the statue of Ozymandias? Question 4 is what message does the poem Ozymandias convey? The proud Ozymandias lies forgotten in the desert. Comment. Poem 4 hai Good Timber. What is the significance of the title of the Good Timber? What happens to the people who work hard? Question 3 hai how can one achieve one's true potential in life according to the poem? Why does the poet suggest people to be like good timber? What is the central idea of the poem Good Timber? Question number 5 poem number 5 और poem number 6 screen पे मौजूद है. Where did Lucy live and what kind of child she was? Where did Lucy's father send her and why? Question number 3 है what did Lucy mean when she said yonder is the moon? What happened to Lucy when while she was going to the town?
What do people still maintain about Lucy Gray and why? Poem 5 है The Abbot of Canterbury. Poem 6, sorry. What was the dispute between the king and the abbot? What were the questions that the king asked? How was the abbot benefited by his shepherd's bold answers? What is the main idea of this ballad? What were three intelligent answers provided in the poem The Abbot of Canterbury? Provided by the Abbot of Canterbury होना चाहिए था ये. Sorry for the mistake. आगे चलते हैं. Last poem to Khahodi. How is Khahodi character depicted by the poet? How do the Khahodis experience sleep? What reward does a Khahodi get after his hard work? Sur Khahodi is the narration of Khahodi's struggle. Elaborate. What is Sur Khahodi? Explain. अच्छा, एक बात और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये जो सारा आप प्रिपरेटरी पेपर या टारगेट पेपर देख रहे हैं, इसकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. क्लिक करके वो देख सकते हैं. आपके पास प्ले है विजिट टू स्मॉल प्लैनेट, जिसके क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन 1, व्हाट इज आयरनिक अबाउट स्पेल्डिंग्स ब्रॉडकास्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? क्वेश्चन 2, व्हाई इज स्पेल्डिंग अनहैप्पी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एलन एंड जॉन? क्वेश्चन 3, why did Crichton want to visit Earth? Question 4, how is Crichton able to communicate with the people on Earth? Question 5, why is General Powers paranoid about Crichton's visit? Question 6, what restrictions are imposed on Spalding's family? Question 7, what extraordinary powers does Crichton possess? Why does Spalding want Crichton to stay? Question 9, how does Crichton reveal that he does not have any favorable view of Earthlings? How does Crichton foil General Powers' attempts to confine him? How much advanced is the civilization of Crichton than of the Earth? Why can the people of Earth not compete with people of Crichton? ये आपका ग्रामर सेक्शन है. अच्छा, ग्रामर सेक्शन को लेके याद रखिएगा कि ग्रामर सेक्शन की आपने तैयारी अच्छी रखनी है, खासकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड है. और सबसे बड़ी बात, यहां से आप 10 नंबर पूरे के पूरे उठा सकते हैं इस सब सेक्शन से, जो कि आपका सब सेक्शन 4 होता है, सेक्शन बी का. अच्छा, शुरू के जो दो आपके पास टॉपिक्स हैं, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो आपके पास मॉडल पेपर आया उसके लिहाज से तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन बनकर आएगा. बाकी prepositions, verbs in correct tense form, transitive and transitive verbs, use of adjectives and adverbs, use of conjunctions, modal verbs, punctuation, capitalization, ये आएगा. कहीं एमसीक्यू में आ रहा होगा या सेक्शन बी में ही आपके पास आ रहा होगा कि भाई आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रोवाइड करें या एरर जो है वो डिटेक्ट करें. इस तरह से आपके पास आ सकता है. लिहाजा सारे टॉपिक्स की आपकी तैयारी होनी चाहिए. सेक्शन सी को देखते हैं. सेक्शन सी में हमारे पास क्या है? सेक्शन सी में हमारे पास ये अनसीन सेक्शन है, क्योंकि आपके पास सारा कॉम्पोजिशन है. क्वेश्चन 3 में पैसेज कॉम्प्रिहेंशन है. अनसीन पैसेज दिया जाएगा, कहा जाएगा इसके क्वेश्चंस को आंसर करें या उसकी प्रेसर राइटिंग करें, यानी कि समरी फॉर्मिंग करें उसकी. क्वेश्चन 4 है ईमेल राइटिंग. बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान सी चीज है. या फिर आप रिपोर्ट राइटिंग करें या आपको क्लास में यकीनी तौर पर बताया जाएगा. और क्वेश्चन 5 है नरेटिव राइटिंग और एसे राइटिंग. ठीक है, ये टॉपिक्स हैं आपके पास. अनसीन सेक्शन है और यहाँ पर गेस करना जरा मुश्किल है कि क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं. फिर भी हमने एसएस के लिए कुछ यहाँ पे टॉपिक्स आपको बताए हैं. फिजिकल क्लासेस वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस, फिजिकल गेम्स वर्सेस ऑनलाइन गेम्स, फुटबॉल वर्सेस क्रिकेट, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ साइंस, यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ इंटरनेट. तो क्वेश्चन 3 और 4 के लिए गेस करना मुश्किल है. इवन क्वेश्चन 5 में भी सिर्फ ऐसे राइटिंग को ही हमने गेस किया है. होपफुली कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और अगर ये है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें. और याद रखिएगा इस वीडियो का की जो पीडीएफ है, यानी कि इस तमाम तर टारगेट पेपर का जो पीडीएफ है, वो मैंने लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है. क्लिक करके वहां से देख लीजिएगा. अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज.